Ladies and gentlemen, good day and welcome to the Servotech Power Systems Limited Q3 and 9M FY24 earnings conference call, hosted by Ventura Securities Limited. As a reminder, all participant lines will be in the listen-only mode, and there will be an opportunity for you to ask questions after the presentation concludes. Should you need any assistance during the conference call, please signal an operator by pressing star and then 0 on your touchtone telephone. Please note this conference is being recorded. The company is today represented by Mr. Raman Bhatia, Founder and Managing Director, and Mr. Vipin Kaushik, Finance Controller. I would now like to hand over the call to the Managing Director of the company, Mr. Raman Bhatia, for his opening remarks. Thank you, and over to you, sir. Thanks, dear. Good evening, everyone, and thank you for joining us today for this conference call. We welcome you all on our Q3 and 9-month FY24 earnings call. While Servotech has achieved a remarkable revenues and profit growth over the past 3 years, I understand that the decline in quarterly growth compared to the previous year's quarter might raise concern. It's important to remember that sustainable growth often requires strategic consolidation phases to prepare for a bigger leap. In Q3, we made a critical investment in infrastructure expansion and I'm very sorry, I got some call, so just allow me 1 minute. While Servotech has achieved remarkable revenue and profit growth over the past 3 years, I understand that the decline in quarterly growth compared to the previous year quarter might raise concern. It's important to remember that sustainable growth often requires strategic consolidation phases to prepare for a bigger leap forward. In Q3, we made critical investments in infrastructure expansion and key partnerships, laying the groundwork for further scalability and market leadership. These investments may have temporarily impacted short-term growth, but they position us for a significant gain in the coming years. While new government guidelines for the EV industry did lead to some project delays, we saw this an opportune moment to make these strategic investments to stay ahead of the competition. I assure you that our commitment to delivering long-term value for our shareholders remaining unwavering. We are confident that the current consolidation period will pave the way for even greater success in the future. I would like to begin with a brief overview about Servotech Power Systems Limited with a rich history of over 2 decades. We have evolved as a sustainable and renewable solution manufacturing company. We take pride in our role as a leader in innovation, driving in transformation in the sustainable energy sector with cutting-edge solar products and EV chargers. Our diverse product line reflects our commitment to eco-friendly, user-friendly, and cost-effective technology, shaping power generation and electric mobility. For instance, our AC chargers 3 kW to 23 kW and DC chargers ranging from 30 kW to 360 kW are seamlessly compatible with all major EV brands. Additionally, our solar division offers a range of products including inverters, batteries, and panels. We are in position to command a significant market share in India's EV charging domain, counting major oil marketing companies, CPOs, EV manufacturers, fleet operators, and other government entities among our permanent clientele. In a bid to bolster our market presence, we have started to build our new factory to cope up market demand, and its phase 1 will get operational before April 2024. The initiative aims to produce 24,000 DC EV chargers annually, propelling us closer to our objective of emerging as one of the leading manufacturers in EV charging industry. We are privileged to participate in BPCL e-Drive project, and I am pleased to announce that recent achievement in securing substantial orders from BPCL for the supply of 1,800 DC chargers and around 2,700 AC chargers. These orders are not only showcase our firm commitment to delivering state-of-the-art, cost-effective technology, but also reaffirm
our steadfast dedication to promoting sustainable energy solutions. These further cement our reputation as a reliable ally in the journey towards a more environmentally friendly future. We have a signed technical cooperation agreement with one foreign company to manufacture world-class internal components like power module, PLC, main control cards in India, and will start manufacturing in defined TMC timelines as per Ministry of Heavy Industry, which is June 2024 and December 2024. The industry. The Indian EV industry is poised for exponential growth in the coming years, supported by strong government commitment, increased private investment, and evolving consumer preferences. With a focus on cost reduction, infrastructure development, and technological advancement, India has a potential to become a global EV manufacturer and consumption hub. Currently, Indian electric vehicle is expected to grow at a CAGR of 66.52% during the 2022 to 2029 forecast period. The Indian solar industry is anticipated to grow at a CAGR of roughly 40% between 2023. Our solar vertical is working on innovative products to contribute in solar mission. Just because the market is also propelled by supported government policies like Pradhan Mantri Surya Yojana in January 24 for rooftop solar installation in 1 crore households. This will enable 1 crore households to obtain 300 units of free electricity every month. For that, we wish to share with you, we are happy that now Servotech is eligible to sell products in UP under subsidy scheme, and we are enrolled with the UP government under the scheme, and we are unable to provide a subsidy to the end user. And till 31st March, our goal that Servotech should get enrolled in more than 7 states like that to provide a subsidy to end user under the scheme, which will give boost in Servotech's revenue. In summary, Servotech's outlook is exceedingly promising as we embrace the vision of pioneering technologies, our relentless pursuit of innovation, strategic partnerships, and our steadfast dedication to sustainability. We are primed to seize the multitude of growth opportunities ahead, confident in our capability and capacity to expand operations and deliver value to our stakeholders. Hand over to Vipin so that he will share with you financial performance. Good afternoon, everyone. We are pleased to share our financial performance. Our revenue increased by 37.8% to 21,750 lakhs in 9 months 24 from 15,850 lakhs recorded in 9 months FY23. The driving force behind this growth was sustained success in the securing orders in the EV charging division. Further, the sustainable increase in the adoption and the demand for the electric vehicles, along with the growing emphasis on the advanced EV infrastructure, significantly contributed to the overall expansion of our revenue. In Q3 FY24, we witnessed delay in the release of the tenders by the various agencies, which impacted our top line. EBITDA demonstrated a remarkable growth of 64.6 to 1,631 lakhs in 9 months FY24 from 990 lakhs in 9 months FY23. This expansion in the margin measured by 121 basis points was driven by the greater proportion of the products with superior margins in our portfolio and increase in the scale of operations. PAT for the 9 months FY24 stood at 834 lakhs, up from 501 lakhs in 9 months FY23, with a margin increase to 3.82 from 3.16 in the corresponding period. And thank you. I thank you for the time, and we are happy to answer any questions you have. And thank you, and we'll hand over to Raman sir for any opportunity. Hello. Yeah. We thank all the participants for attending this session. We believe that we have satisfactorily run you through our company and business model and addressed every arising question thereon put on the floor by the participants. We continue to see growth in our broad product portfolio and witness a strong momentum across our business supported by R&D and other strategic initiatives. We remain focused on bringing new products, exploring new markets, and creating value for all our stakeholders. And hope you have a great day ahead. Thank you once again. Thank you.
Thank you, sir. Ladies and gentlemen, we will now begin the question and answer session. If you have a question, please press star and one on your telephone keypad and wait for your turn to ask the questions. If you would like to withdraw your request, you may do so by pressing star and one again. Dear participants, if you have any questions, please press star and one on your telephone keypad. So the first question comes from Aditya Shah, an individual investor. Please go ahead. Hello, can you hear me? Yes. Hi, congratulations for your 9 monthly stellar results to you and your team. I'm really happy as a shareholder for that. But my first question would be, sir, that if you compare the quarter-on-quarter performance, there was a steep decline, not just on terms of capex, but also in terms of revenue. Can you share two things? First, on what kind of capex that you're actually undertaking, how will it contribute to the revenue in the near term and long term? And secondly, why the revenues were so reduced in comparison to the previous quarters? Please allow me to speak in Hindi if you are okay. Then I will. Please, sir. Please go ahead. Yes. बिल्कुल sir. Yes. मैंने अपनी लास्ट स्पीच में भी आपसे बताया है, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ. गवर्नमेंट की बहुत सारे प्रोजेक्ट और बहुत सारी पॉलिसी दोबारा से फ्रेम की गई हैं, जिसके हिसाब से आपको मैन्युफैक्चरिंग में अपने प्रोडक्ट में बहुत कुछ चेंज करना था. एंड वी वर वेरी अनसर्टन कि हमें फाइनल क्या स्टेप लेना है. इट वॉज नॉट क्लियर सिंस लास्ट 6 months, राइट. तो ये एक ऐसा टाइम था कि जब आप खाली होते हैं तो आपको ये सोचना होता है कि आप इंतजार करें या कुछ काम करें. तो हमें लगा कि कम से कम हम अपनी फैसिलिटीज को बड़ा करते हैं. जब मार्केट बहुत बड़ी होनी है तो क्यों ना बड़े लीडर की तरह काम किया जाए. तो ड्यूरिंग दैट वी हैव स्टार्टेड वन न्यू फैक्ट्री प्लांट विच कैपेसिटी विल गेट डबल, राइट. तो अभी तक हमारा जो टोटल कैपेक्स है दैट आई थिंक विल कॉस्ट अराउंड 30 crore इन टोटल. ओके. एंड ऑन द फाइनल बैलेंस शीट यू विल फाइंड दिस कैपेक्स बिकॉज 9 months में बैलेंस शीट नहीं होती है. दैट्स व्हाई यू आर नॉट एबल टू सी. बट इन फाइनेंशियल ईयर 23-24 you will find this amount. Okay. And sir, कब तक ये capex होगा complete? मतलब the factory कब तक क्लोज होगा वो? टोटल कैपेक्स जिस तरीके से इंडस्ट्री ग्रो कर रही है ये तो अगले 3-4 साल चलने वाला है. हमने टोटल जो कैपेक्स का प्लान किया है वो 300 crore का दिया है. अगर आप हमारी पुरानी भी स्पीचेज और सारी चीजें देखेंगे तो वी हैव ऑलरेडी discussed and briefed everyone that we are going to invest more than 300 crore in next 3 years. Okay. और ये फैक्ट्री कब तक होगी? कब तक बनेगी वैसा? ये फैक्ट्री का जो पहला फेज है इट विल गेट स्टार्टेड इन अप्रैल 2024. April 2024. Okay, sir. एंड सर वन मोर थिंग कि रेवेन्यूज जो कम हुए थे उसका कोई रीजन रहेगा हमारे पास? तो रीजन तो बताया आपको कि सारे जितने भी प्रोजेक्ट हैं वो सारे डिले हुए गवर्नमेंट के. और हमारे बिजनेस में हमारा 60% से ज्यादा गवर्नमेंट प्रोजेक्ट पे हम डिपेंड है. ओके. और वो इम्पैक्ट आपको हमारा नहीं, ईवी डोमेन में जितनी भी कंपनियां सबसे देखने को मिलेगा. इट इज नॉट ओनली अस. यू कैन चेक ऑल द सेक्टर. Correct. Yes, sir. Okay, thank you so much. Thank you so much for answering. और एक क्वेश्चन है कि आपको ये बजट में व्हाट डू यू थिंक अबाउट द ईवी पॉलिसीज बाय निर्मला मैम? उनके बारे में कोई आपका ओपिनियन है कि क्या हो सकता है एंड हाउ विल इट कंट्रीब्यूट योर ग्रोथ? सर अभी ये जो बजट आया है ये इंटरमीडिएटरी बजट है. एक्चुअल बजट आएगा आफ्टर द इलेक्शन. तो बेटर है उस पर बात करें क्योंकि अभी ये बजट कितना रहेगा नहीं रहेगा क्या होगा वी कांट से. तो बेटर वी हैव टू वेट. Okay, sir. No problem. Thanks. I think that's good for me. Yeah. Thank you. Thank you, sir. The next question comes from Agastya Dev from CEO from Capital. Agastya Dev. Please go ahead. अच्छा.
हेलो सर, अगस्त दवे नाम है सर। थैंक यू सर, आपके एक अपॉर्चुनिटी देने के लिए, आपसे बात करने के लिए। दूसरा, आपके ओपनिंग रिमार्क्स में काफी कुछ आंसर्स मिल गए। सर, ये जो डिलेज हैं उनका अभी क्या स्टेटस है? क्या वापस ट्रैक पर आ गया है? बिकॉज ऐसा ही सिमिलर डिले सोलर पंप में भी देखने को मिला था, और वो सब एक एक दो क्वार्टर से डिले हुआ एंड फिर अभी सब ट्रैक पर आ गया है कुसुम स्कीम में। सर ये भी ट्रैक पे आ गया है, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये भी ट्रैक पे आ गया। अगर आप ऑनलाइन जाके न्यूज देखें तो अभी हमें बीपीसीएल का पहला ऑर्डर मिला है 1800 यूनिट का। जी तो करेक्ट यहाँ सर, मुझे करेक्ट कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हिंदुस्तान में जितने भी टेंडर रोल आउट हुए हैं उनकी टोटल क्वांटिटी है 8060 यूनिट की जी। एंड आई एम हैप्पी टू शेयर विद यू, सर्वोटेक का मार्केट शेयर उन ऑर्डर का इज मोर देन 58%। 58 सर, 58? यस 58। ओके ओके। तो यू कैन अज्यूम कि कितना बड़ा मार्केट शेयर हम लेने जा रहे हैं बहुत जल्दी। तो सर मैंने आपकी प्रेस रिलीज देखी थी, तो 38 जनवरी को आपको ये ऑर्डर आपने एटलीस्ट पोस्ट किया था एनएससी पर। ये बीपीसीएल वाला जो नया ऑर्डर आया 120 करोड़ का। तो अगर मैं आज की बात करूं तो आज की डेट में ऑर्डर्स का ऑब्वियसली फ्लो आ ही गया है, और आपका मैन्युफैक्चरिंग भी अभी लाइन पर आ गया है, या अभी एक आध महीना और डिले रहेगा सर? मैन्युफैक्चरिंग में हम पीछे नहीं है। अच्छा। हम ऑर्डर अवेटेड थे, और अच्छा। जो भी ऑर्डर अवेटेड थे इसलिए हमने नई फैक्ट्री स्टार्ट कर दी, क्योंकि आगे बहुत बड़े ऑर्डर और आने वाले हैं। तो उसकी मैं समझा सर, अभी मैं समझ गया पूरी सर, तरह तैयार है। मैं समझा सर। सर क्या फिर आपने अपना जो यूपी प्रोजेक्ट था, आई नो लैंड एक्विजिशन चल रहा है अभी या स्टार्ट होने वाला है, तो क्या आप वो लग रहा था सर, वो काम जो चल रहा था उसमें गवर्नमेंट के जो काम है वो थोड़े से आपको मालूम है बहुत टाइम देते हैं, वो टाइम जो ले रहे हैं उसके लिए मैं रुक नहीं सकता। तो ना रुकेंगे, इसके लिए हमने जहां हमारी फैक्ट्री है वहां हमने एक नई फैक्ट्री एक्वायर की थी लास्ट ईयर में। जी 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 ऑलरेडी एवरीथिंग। तो इट इज एन इंटरमीडिएटली प्लान, जिसको आप कह सकते हैं मिड टर्म प्लान, वो हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया, सो दैट हमारी कैपेसिटी डबल हो जाए। समझ गया सर, समझ गया सर। तो आपने बेसिकली अपनी तरफ से सब तैयारी कर दी जब थोड़ा सा एक्टिविटी में लल था। अब आप रेडी हैं, और जैसे जैसे ऑर्डर आते जाएंगे आप एग्जीक्यूट करते जाएंगे। आपकी तरफ से कुछ डिले नहीं होगी। जो डिले होगी वो ऑर्डर आने की तरफ से हो सकती है, आपकी तरफ से नहीं होगी। आप तैयार हैं? हम बिल्कुल तैयार हैं। आप बिल्कुल तैयार हैं। अगर हम कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं बहुत जल्दी, तो हम चाहेंगे कि कुछ शेयर होल्डर हमारी फैक्ट्री को देखना चाहे तो मोस्ट वेलकम। हम कुछ ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं बहुत जल्दी। इवन हम उनकी वीडियो और कुछ वीडियो रिलीज करेंगे ऑनलाइन, सो दैट आप लोगों को पता लग सके कि हम पहले से कहाँ हुआ। जी 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 जरूर सर। आपके जो पुराने कमेंट्स रहे हैं उसमें आपने मेंटेन किया है कि लॉन्ग टर्म में आप 60-40 का रेशो लेके चलेंगे, 60% फ्रॉम ईवी एंड 40% फ्रॉम सोलर। एंड सोलर में भी आपने बहुत स्पेसिफिकली रूफटॉप सोलर की बात की है, तो आप थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर डिस्कशन ईवी के में आपने अपने प्लान्स और कैपेबिलिटीज बहुत डिटेल में बताए हैं, लेकिन जो सोलर साइड है उसमें आपकी कैपेबिलिटी क्या क्या है सर? आप क्या क्या प्रोवाइड कर सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है आपका, बहुत ही बढ़िया सवाल है आपका। मैं आपको उस पर एक ही बात बताना चाहता हूँ सोलर पर बात करने से पहले। राइट, ईवी के अंदर हम लोगों ने ऐसा कहा था कि हम मार्केट का बहुत बड़ा शेयर ले पाए, राइट, और हम उस दिशा में आगे बढ़ गए हैं, जो मैं आपको अभी कह चुका हूँ कि अप्रोक्सीमेटली 58% है, जो 1% ऊपर नीचे हो सकता है कैलकुलेशन। राइट, मैं आज कंफर्म जो किया है तो मोटा मोटी उसके आसपास रहेगा, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा शेयर होता है कि पूरे हिंदुस्तान के मैन्युफैक्चर एक तरफ और सर्वोटेक कह रहा है 58%, जो 55 से लेकर 60 की कुछ भी हो सकता है। सेम ऐसे ही अगर हम बात करें तो जो सोलर की हम बात कर रहे हैं, सोलर की मार्केट में भी हम कुछ बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ ऐसे प्रोडक्ट लाने की कोशिश कर रहे हैं जो आज आम इंसान के लिए अफोर्ड करना आसान नहीं है। राइट, अच्छा। यानी कि अगर आज आप जाते हैं, एग्जाम्पल लेता हूं कि आज हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ा जो मार्केट शेयर है वो कार का, वो है मारुति का। उसकी रीजन ये है कि आम आदमी की पॉकेट है, जो बजट अलाउ करती है उस रेंज की गाड़ियां आती हैं उसकी। जी, राइट। मर्सिडीज चाह के भी उसका मुकाबला नहीं कर सकती जी, क्योंकि मर्सिडीज का वो रेंज नहीं है, कस्टमर उसका कस्टमर कैटेगरी नहीं है वो, तो वो कभी भी इतना बड़ा मार्केट शेयर नहीं ले सकती। यू एग्री विद मी? राइट। अगर हम इसी बात को देखते हैं तो, लेकिन जो आदमी की मारुति खरीदता है वो एक बार ये जरूर सोचता है कि काश मैं ये वाली गाड़ी ले सकता, लेकिन मेरा बजट नहीं है, ठीक है, मेरे को ये सारे फीचर मिल रहे हैं, ऐसे मन को समझा के आगे बढ़ जाता है जी। अग्री। तो सेम ऐसे ही
सोलर इंडस्ट्री में भी ऐसा होता है कि कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसको लेने की इच्छा सब रखते हैं, लेकिन वो ले नहीं पाते क्योंकि लेने उनके बजट नहीं है, उनके बजट नहीं है, राइट। हम वो प्रोडक्ट आज की प्राइसिंग पे सब देने जा रहे हैं, जिसमें से सबसे बड़ी बात अगर मैं करूं तो जो पानी वाली बैटरी है उसको हम लिथियम बैटरी में चेंज करने जा रहे हैं ऑन सेम प्राइस। ओके। ऐसे ही हम सोलर के भी एडवांस टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट जो आम कस्टमर के लिए अवेलेबल नहीं है, उसको आम कस्टमर के लिए जो अवेलेबल है उसी प्राइस पे रिप्लेस करने जा रहे हैं। अच्छा। तो हम मार्केट में एक बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन लेके आने वाले हैं जिस पर हम काम कर रहे हैं। इसमें टाइमलाइंस क्या है सर? सोलर में आपका रैंप अप कैसे हुआ? क्योंकि आप हमेशा यही मेंटेन करते हैं कि आपके ध्यान में हमेशा 60-40 का रेशो है, लेकिन ईवी में प्रोग्रेस तो बहुत ज्यादा है। तो इस रेशो की बात ऐसा है ना, जब आप रेवेन्यू बढ़ाते हैं, राइट, तो दोनों तरफ से जो रेवेन्यू की ग्रोथ है, अगर वो दोनों की ग्रोथ को मेंटेन भी कर दूं, बराबर भी कर दूं, तो भी अब ये समझ लीजिए कि अगर 100 है और 50 है और दोनों को मैं अगर 50% बढ़ाऊं तो एक टाइम ऐसा आएगा जब दोनों के अंदर बहुत बड़ा फर्क आएगा। एग्जाम्पल देता हूं, जब मेरा बेटा पैदा हुआ तब मैं 25 साल का था, तो मेरे बेटे में और मेरी एज में 25 टाइम्स का डिफरेंस था। जी जी, मैं समझ गया। बेटा है तो आज वो फर्क आगे का रह गया। तो ऐसे ही वो जो मल्टीप्लीकेशन है ना, उस मल्टीप्लीकेशन की वजह से ये डिफरेंसेस कम हो जाते हैं। अच्छा, ठीक है। जी 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 जी। तो दैट इज वे, क्योंकि ईवी इंडस्ट्री बहुत तेजी से बढ़ रही है और क्योंकि उस इंडस्ट्री में भी बहुत बड़ा वैक्यूम है जी, तो वहां पर शेयर लेना बहुत आसान है इन कंपेरेटिव टू सोलर। और दोनों का जो वॉल्यूम्स है उन वॉल्यूम के ऊपर मल्टीप्लीकेशन फैक्टर अगर दोनों पे बराबर का भी लगा दूं तो भी ईवी इंडस्ट्री का साइज बढ़ता चला जाएगा जी, और इन टोटल में परसेंटेज मेंटेन नहीं रह पाएगी, वो बदल जाएगी। जी जी जी। थैंक यू सर। मेरे क्वेश्चन सही थे। एक सजेशन है सर कि क्योंकि थोड़ा सा नेसेंट स्टेज में है इंडस्ट्री, अभी अभी स्टार्ट ही हुई है और गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स बहुत आते हैं, तो गवर्नमेंट की तरफ से थोड़े बहुत डिलेज आते रहते हैं। अगर आप थोड़ा सा ये इंडिकेशन दे दिया कीजिए कि कुछ डिले हुआ है, तो ऐसा फीलिंग नहीं आएगी कि अरे कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, क्योंकि क्लियरली कुछ गड़बड़ नहीं हुआ है, जस्ट एक टेम्परेरी डिले है which happened in other government schemes also last year. So it is nothing extraordinary. That is just a suggestion, sir. Other than that, sir, I have nothing more to say. And thank you for answering my question, sir. Very useful discussion. Thank you. मैं एक बात आपकी बात का जवाब इसलिए देना चाहूँ, आपकी एडवाइस वेल टेकन, बट मैं आपको उसका जवाब देना चाहता हूँ जो दूसरे शेयर होल्डर भी सुन रहे होंगे। वो ये है सर कि दो चीजें होती हैं, या तो हम अच्छे वक्ता बन सकते हैं या अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं, राइट सर। एग्रीड। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम दूसरे वर्टिकल साथ साथ क्रिएट कर रहे हैं ताकि हमारा डिपेंडेंसी ऑन द गवर्नमेंट प्रोजेक्ट कम हो जाए। जी 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 जी, बिल्कुल। नंबर 2 ये होता है कि जो ये डिले होते हैं वो आपको ये बता के नहीं आते कि मैं 6 महीने के डिले आ रहा हूँ या 5 महीने के, वो हर रोज ये हो रहा होता है कि बस नेक्स्ट वीक हो गया और नेक्स्ट वीक हो गया और नेक्स्ट वीक हो गया। जी जी। तो बहुत बार आप ऐसी सिचुएशन में नहीं आ पाते कि आप किसी को कुछ कम्युनिकेट कर पाए, क्योंकि मैं आपकी डिफिकल्टी समझता हूँ सर, ये आपके हाथ में कुछ था नहीं है, अगर आपके कंट्रोल में होता तो ये हो सकता था, लेकिन मैं समझता हूँ सर, मैं आपका पॉइंट समझा सर। आई अंडरस्टैंड सर, आई अंडरस्टैंड। थैंक यू वेरी मच सर। 9 मंथ में अगर आप देखें तो हम बेटर हैं पिछले साल के मुकाबले, दैट इज नंबर 1। नंबर 2, जब आप बेटर होते हैं तो सेम लाइक अ गैम्बलर यू कैन टेक अ बेट। तो हमने वही बेट ली कि ठीक है इस टाइम को हम किसी और तरीके से यूज करते हैं। Very sensible thing to do, sir. Very sensible thing to do. Very sensible thing to do, sir. I appreciate it, sir. So thank you very much, sir. All the best, sir. All the best, sir. All the best. Thank you, sir. The next question comes from Mr. Jitesh Parmar, an individual investor. Please go ahead. थैंक यू रमन सर, मेरे सवाल लेने के लिए और आपको ये Q9 रिजल्ट के लिए। सर मेरे 2-3 सवाल है। मैं आपका पहला सवाल, आपका नाम? आप भी मेरा नाम सुन पा रहे हैं? जितेश परमार। अच्छा, जितेश परमार। हाँ सर, हमने पहले भी बात की है पिछले कॉन कॉल पे। हाँ सर मैं 2-3 सवाल पूछना चाहूंगा। पहला तो नंबर पे सर, आई अंडरस्टैंड कि इम्पैक्ट रहा है गवर्नमेंट प्रोजेक्ट का, तो ये अगले क्वार्टर में भी ये इम्पैक्ट आएगा या फिर आएगा? तो सर जो हम लोग गाइडेंस दे रहे थे स्टार्टिंग में,
अराउंड 450 करोड़ इन रेवेन्यू, तो ये अब आप कैसे रिवाइज होते देखते रहे हैं और अगले साल के लिए आपका क्या मतलब ऐसे गाइडेंस रहेगा इन दैट केस? जितने ऑर्डर सर जो ऑर्डर हमारे पास आ गए हैं और कंफर्म हो गए हैं, उनकी डिलीवरी स्टार्ट होते होते मार्च आ जाएगा। तो वो जो डेफर आ रहा है वो अगले क्वार्टर में, फर्स्ट क्वार्टर में जाके आपको देखना शुरू होगा। ओके सर। तो ऑर्डर तो हो गए हमारे पास, बट उनकी डिलीवरी और एग्जीक्यूशन स्टार्ट नहीं हो पाएंगे, बिकॉज 30 जनवरी के आसपास शायद हमने रिलीज की है अपनी पहली न्यूज, राइट। तो गवर्नमेंट में जब आपको ऑर्डर आते हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं, तो दे टुक मिनिमम 1 मंथ। तो फरवरी उसमें जाएगा, मार्च में कॉल ऑफ आने शुरू होंगे और हमारे एग्जीक्यूशन के लिए 20-25 दिन लगते हैं। तो मैं जितना मर्जी कर दूं, उसका एग्जीक्यूशन पार्ट से 1 और 2% ही ऐड होगा इस क्वार्टर में, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर में। तो बाय डिफॉल्ट फर्स्ट क्वार्टर में ट्रांसफर होगा। ओके सर। और सर कॉन्ग्रेचुलेशंस, आज एक्सचेंज पे जो नोटिफिकेशन आया अदानी टोटल के कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तो उसके लिए बहुत सारी बधाइयाँ सर। मुझे ये जानना था सर, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें से हमें कितना मतलब 75,000 टोटल ईवी चार्जर्स का ये ऑर्डर है, तो अगले साल के लिए और अगले आने वाले 2 सालों के लिए हम क्या सोच सकते हैं? जितेश जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ आ रही है सर। सर 75,000 पीसेस का ऑर्डर नहीं लिखा कहीं भी, उसमें ये लिखा है कि अडानी का प्लान 75,000 यूनिट का है, उसमें से हम कितना ले पाएंगे इस पे काम कर रहे हैं। ओके सर कोई भी खबर कैसे भी लिखी हो, अगर हम बात कर रहे हैं तो हम आपको बड़ा क्लियर कट आपको बताएंगे, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जितना मैं इन्वेस्टर के साथ क्लियर हूं, उतना ही इन्वेस्टर मुझ पर यकीन करेगा और मेरे साथ चलेगा। एक और बात कह देना चाहता हूं जो शायद यहाँ पर मेरे दिमाग में आ गई है, आई जस्ट वांट टू कम्युनिकेट टू यू सो दैट इट शुड गेट स्प्रेड टू ऑल माई शेयर होल्डर्स। करंटली वी हैव क्रॉस मोर देन 1 लाख शेयर होल्डर्स इन आवर कंपनी। ये एक बहुत बड़ी बात है कि 1 लाख से ज्यादा शेयर होल्डर हो गए आज सर्वोटेक के। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, और शायद ये इसलिए हो पाया कि हम जैसे भी थे, जो भी थे, वो हमने क्लैरिटी हमेशा अपने शेयर होल्डर को दी है कि हम कौन हैं, हम क्या हैं, हम क्या कर रहे हैं, ये हमेशा सच बोला है। और शायद जो भी हमें पता लगता है, जो भी हम काम करते हैं, वो इमीडिएटली हम स्टॉक मार्केट को बता देते हैं कि हम ये करने जा रहे हैं या हमने ये किया। नहीं सर, वो तो है, एंड थैंक्स फॉर दैट। इट हैज ऑलवेज बीन वेरी ट्रांसपेरेंट, तो थैंक यू वेरी मच। तो सर मैं वही सवाल पे वापस आ रहा था, तो हमारी पोटेंशियल क्या है? हम लोग वही मार्केट का जो एस्टिमेट है, फिलहाल हमारा मार्केट शेयर है, क्या हम अज्यूम कर सकते हैं कि 58%, 50% क्योंकि वी कुड विन, और हमारी विनेबिलिटी और सबसे डोंट नीड टू अज्यूम, इट इज 110% कंफर्म। ओके, It is not a concern. It has been done already. Okay, sir. Now we are waiting for the orders copy. Okay. और सर हमारे जो ऑर्डर्स फिलहाल है वो काफी गवर्नमेंट के पास है, तो हम उसका इम्पैक्ट हमारे कैश फ्लो पे भी देखेंगे, कैसे देखेंगे? मतलब क्या हमारे डेटर डेज बढ़ सकते हैं इससे सिग्निफिकेंटली? कैसे इम्पैक्ट आएगा सर हमारे कैश फ्लो पे और वर्किंग कैपिटल पे? नहीं चाहिए, उसकी बजाय कि इसमें मेजरली जो एग्जीक्यूटिंग एजेंसीज हैं वो ऑयल मार्केटिंग कंपनी है मेजरली, उनकी पेमेंट टर्म्स अच्छी रहती हैं, एक आध को छोड़ के, नाम नहीं ले सकता अच्छा, बट एक आध को छोड़ के, तो मुझे लगता है बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। बट वैसे आपको बता दूं कि अभी लीगल टीम और कलेक्शन टीम इज वेरी गुड इन सर्वोटेक, तो दे आर डूइंग वेल। ओके, और सर लास्ट क्वेश्चन, अब हम चाहते हैं कि 60-40 हमारा रहे बिटवीन सोलर एंड ईवी, बट अभी हमारा रेशियो क्या होगा? अगर हम Q9 देखें या फिर ये साल के लिए देखें, तो हमारा रेशियो क्या हो सकता है सोलर ईवी के बीच में? लगभग 70-30 है। 70 सोलर और 70 ईवी? नो, 70 ईवी। ओके सर, आई विल गेट बैक इनटू द क्यू। ओके, मेरे सवाल होंगे तो मैं वापस आऊंगा। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। Thank you, sir. Dear participants, if you have any questions, please press star and 1 on your telephone keypad. The next question comes from Sahil Gupta, an individual investor. Please go ahead. Hello. Thank you, sir, for taking up the question.
सर ये जो अदानी का चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर आने वाला है उसमें हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट हमने साइन किया उसमें कुछ कंफर्म्ड ऑर्डर्स नंबर ऑफ चार्जेस भी हैं या फिर हम अज्यूम कर रहे हैं कि 50%? नहीं सर, कंफर्म्ड ऑर्डर आ चुकी हैं, डिलीवरी स्टार्ट हो चुकी हैं, लेकिन वो क्वांटिटी इतनी बहुत बड़ी नहीं है जिसके लिए कि उसको कोई पब्लिकली डोमेन पे डालने की जरूरत पड़े, दैट्स व्हाई, राइट। और इतनी छोटी भी नहीं है कि हम उसको ना बताएं किसी को। ओके सो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो क्वांटिटी एवरी ईयर बढ़ती जाएगी? सर एक मैं सर कहना चाहता हूँ, जो लोग एक्सपेक्ट करते हैं वो जिंदगी में कुछ नहीं करते। हम लोग उस पर काम कर रहे हैं और बहुत सीरियसली काम कर रहे हैं। हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई भी ईवी चार्जर खरीदेगा तो एक बार सर्वोटेक का नाम जरूर याद करेगा। इतना फैला देंगे हम अपने आप को, इतना डिटेल्ड में काम कर रहे हैं। हिंदुस्तान के अंदर पावर मॉड्यूल पे भी कोई काम नहीं कर रहा, पीएलसी पे कोई काम नहीं कर रहा। हम हिंदुस्तान की पहली कंपनी बनेंगे जो ये दोनों प्रोडक्ट इन हाउस बनाना शुरू करेंगे। इसके एसपीडी लेवल पे हमने काम शुरू कर दिया है। वी विल बी नंबर 1। डोंट वरी अबाउट दैट, वी आर वेरी सीरियस अबाउट ऑल दीज थिंग्स। ओके ग्रेट सर। सर सेकंड क्वेश्चन ये था कि हमारी जो सब्सिडरीज हैं उनके बारे में अगर आप थोड़ा बता पाएं, जैसे रीब्रीथ है उसमें टोटल मार्केट साइज कितना हम लोग देख रहे हैं? सर वो सब्सिडरीज इंडिपेंडेंट इंडिविजुअली काम कर रही है, उसके बारे में भी हम कुछ प्लान कर रहे हैं कि आपको डिटेल थोड़ा सा आप लोगों से शेयर कर पाएं और बहुत जल्दी कुछ अच्छी खबर और अच्छी डिटेल्स आपसे शेयर करेंगे बहुत जल्दी। आज के लिए वो ठीक नहीं है क्योंकि अभी उसके ऊपर कोई बहुत ज्यादा डेटा और प्रॉपरली हम लोगों ने कुछ बनाया नहीं है। बट आई एम श्योर एंड आई वांट टू कमिट यू पर्सनली विद इन द नेक्स्ट 10-15 days यू विल गेट सम गुड न्यूज इन अ मार्केट अबाउट सब्सिडीज। Okay. Great, sir. Thank you very much. Best of luck. Thank you. Thanks a lot. Thank you, sir. The next question comes from Pranay Gandhi from Green Portfolio. Please go ahead. हाय, गुड इवनिंग सर। सर मैं माफी चाहूंगा अगर ये आप शेयर कर चुके हैं और मैं मिस आउट कर गया हूँ। आप कैपेसिटी, थैंक यू सर। सर एक बार आप कैपेसिटी बता सकते हैं अभी हमारी कहाँ पे स्टैंड करती है ईवी पे स्पेसिफिक में? आपका शुभ नाम एक बार दोबारा पूछना चाहूंगा। प्रणय। मिस्टर प्रणय, PRANAY। PRA, अच्छा प्रणय। हाँ जी। प्रणय, या प्रणय जहां तक बात है वॉल्यूम की, तो मैं आपको सर ये बता देता हूं कि हमारे अलावा अगर कोई बड़ी से बड़ी क्वांटिटी हिंदुस्तान में सप्लाई करने की बात करता है तो उसकी टोटल वॉल्यूम यानी कि उसकी लाइफ टाइम वॉल्यूम जो वो बात करते हैं डीसी चार्जर की, राइट? हेलो जी। लाइफ टाइम वॉल्यूम की बात कर रहा हूं, तो दैट वाज अराउंड 3500 लाइफ टाइम वॉल्यूम बात कर रहा हूं। एंड ओवर लास्ट ईयर 1 year वॉल्यूम वाज अराउंड 4000। ओके। एंड दिस ईयर वी आर प्लानिंग टू सप्लाई अराउंड 12,000 यूनिट्स इन दिस ईयर। ओके। Correct. And next year we are planning more than 24,000 units in a year. And per unit approximately price is around 6 lakh rupees. Now you can calculate how much it will be. Okay. सर ये आप जैसे इंक्रीमेंटल यूनिट्स आप सप्लाई कर रहे हैं तो कैपेसिटी एक्सपेंशन के बाद जैसे जैसे कैपेसिटी एक्सपैंड हो रही है वैसे है या आज की डेट में प्रेजेंट कैपेसिटी कितना होएगा? सर आज की डेट में जो कैपेसिटीज आने वाली है मैं उसके हिसाब से पहले से प्रिपेयर हूँ। अभी मेरे पास जो कैपेसिटीज आ चुकी है उसके लिए मैं लगभग तैयार हूँ। करेक्ट। और अगली जो क्वांटिटी आनी है उसके लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ। तो मैं 24,000 की क्वांटिटी के लिए अपनी अगली फैक्ट्री तैयार कर रहा हूँ। ओके, अच्छा। एंड सर जैसे अगर हम 5 से 7 साल का आउटलुक लें, क्योंकि अगर हम उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं तो काफी इंफॉर्मेशन बहुत वेरिड है, एक सिंगल पॉइंट नहीं मिलता कि आपके हिसाब से 2030 तक कितने ईवी चार्जेस चाहिए होंगे, वो कैलकुलेशन का बेसिस क्या होता है? जैसे मैंने कहीं पे पढ़ा डेवलप कंट्रीज में 1:20 का रेशियो चलता है, तो आपके हिसाब से इंडिया में 2030 में कितनी इलेक्ट्रिक व्हीकल होएगा एंड उनके हिसाब से इलेक्ट्रिक चार्जेस कितने चाहिए होंगे? सर इसमें एक चीज है, 2 बातें काम करती हैं। जब आप कहते हैं 1:20 या कोई भी आप एक फिगर बोलते हैं तो ये तब तक चलता है जब तक एक सैचुरेशन पॉइंट को अचीव ना करें।
एग्जाम्पल देता हूँ कि एक रोड 10 किलोमीटर की है, राइट, और हम ये कहते हैं कि रोड के ऊपर हर 1 किलोमीटर पे एक चार्जर होना चाहिए। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आई एम जस्ट गिविंग यू ए वेग एग्जाम्पल। इट मीन्स कि मेरे को 10 चार्जर वहां लगाने जी, करेक्ट। अब 10 चार्जर तो मैंने लगा दिया, लेकिन मेरे को ये पता लगा कि यहाँ पर गाड़ी जो है वो 100 आती है और 100 में से 50 गाड़ी चार्ज होनी चाहिए। तो अब मुझे क्या है कि हर एक चार्जिंग स्टेशन पे 2-2 चार्जर लगाने पड़ेंगे। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, करेक्ट। तो इसके बेसिस पे वो जो कैलकुलेशन है जो आपने बोली, वो ऐसी कैलकुलेशन के बेसिस पे उन्होंने एक थ्योरेटिकल कैलकुलेशन कर दी, करेक्ट जी। बट जब हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में जो वॉल्यूम आने वाला है और जितनी भी नेशनल हाईवे हैं और जो सारी चीजें हैं, उसके हिसाब से जो वॉल्यूम मैं बोलने जा रहा हूँ, अगर वो वॉल्यूम इंडिया में अचीव हो गया तो सर उसको तो मेरे ख्याल से अगले 8-10 साल में हिंदुस्तान के सारे मैन्युफैक्चरर्स मिल के ही पूरा नहीं कर पाएंगे। दैट वॉल्यूम इज अराउंड 1 मिलियन चार्जर जी जी 10 लाख चार्जर। और अभी हम हिंदुस्तान में 10,000 चार्जर की बातें कर रहे हैं एक साल में, और मैं कह रहा हूं कि 2030 तक 10 लाख चार्जर लगने हैं। सर इसमें एक चीज है आपकी, जैसे नवंबर की इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन थी, उसमें मेंशन था कि आप कैपेसिटी बढ़ा के 6 लाख ईवी चार्जर लेके जाना चाहते हैं, तो वो किस रेफरेंस में था? तो उसमें एक ही चार्जर भी है, सिर्फ ईवी उसमें मैन्युफैक्चरिंग। जो आप कार खरीदते हैं, आपकी कार के साथ जो चार्जर आता है, या आपके घर में जब आप गाड़ी खरीद लेते हैं आपके घर में चार्जर लगता है। अगर हिंदुस्तान में 20 लाख गाड़ियां बिक गई तो उसका 20 लाख चार्जर लगेंगे ना, एसी चार्जर। ये मैं डीसी चार्जर की बात कर रहा हूँ। ओके, 1 मिलियन चार्जर आई एम टॉकिंग अबाउट अ डीसी चार्जर। ओके, देयर आर 2 डिफरेंट कंटेक्स्ट एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द टोटल कैपेसिटी देन आई एम टोटलिंग बोथ। एसी डीसी आप दोनों मिला के बोल रहे हैं कि उतनी कैपेसिटी आप लेंगे। Yes. Currently, we are manufacturing around 168 chargers per day for AC. Okay. And DC कितना होएगा? Here I am talking you around 500 chargers in a month for a DC. Okay. Okay. And sir, उसी के साथ एक और चीज का मेंशन था कि रेवेन्यू आप 240 करोड़ से 1200 करोड़ ईवी चार्जर से 25 तक करना चाहते हैं जी। तो वो तो मैंने आपको बताया है ना कि अगर 10,000 चार्जर कर लेते हैं तो 600 करोड़ होता है। नहीं मतलब मैं ये जानना चाहता जी, सॉरी बोलिए। तो 23,000 चार्जर 6 लाख रुपए की वैल्यू से 1200 करोड़ होता है। हाँ जी, तो मेरी कैलकुलेशन तो ठीक ही है, जो मैंने पीछे बोला था वो याद बोलो, वही मैं कैपेसिटी बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ। एंड आप कितने ऑप्टिमिस्टिक हैं उसको लेके FY25 में ही? फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली आज हम जहाँ खड़े हैं जी, इट वॉज प्री डिसाइडेड अराउंड 7 years बैक। हाँ जी, अबाउट द रेवेन्यू अबाउट द प्रॉफिट्स, ओनली प्रोडक्ट लाइन हैज बीन लिटिल बिट चेंज एंड व्हाट वी हैव प्लान्ड फॉर दिस ईयर, राइट, वी आर लिटिल बिट बिहाइंड आवर टारगेट। बट इसका मतलब ये नहीं है, क्योंकि जब हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर जब मंथ ऑन मंथ देखते हैं तो फर्क आ सकता है, बट इन टोटलिटी वी आर ऑन राइट ट्रैक एंड वी डेफिनेटली अचीव व्हाट वी हैव प्लान्ड फॉर 2027 एंड 2025। ओके, परफेक्ट सर। मार्जिनल डिफरेंस कुड बी 5-10%। हाँ जी, हाँ जी, मेक सेंस सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Thank you, sir. The next question comes from Prerit Chaudhary from Green Portfolio. Please go ahead. Hello. Yes, sir. I think you have given most of the answers. I had just one or two questions. On this lithium that you have mentioned in the... Prerit. Yeah, Prerit. Prerit. Okay. Yes, sir. So on this lithium battery that we are planning to scale in till 2027. So these all battery would be for a solar segment, right? जी। और इसमें ये we have no plan to come in EV domain for the lithium battery. Okay. अच्छा, not in the EV domain. Okay. And ये सिर्फ हमारा assembly. We are not planning. Okay, not planning. Okay. And इसमें ये सारा हमारा assembly का काम होगा या we would be start manufacturing the lithium batteries ourselves? No sir, assembling plan है
लिथियम बैटरी का प्लांट अपने इंडिया में किसी के पास भी नहीं है, कोई नहीं बना रहा है, इवन कोई बड़ी कंपनी नहीं बना रही है। तो मेरा भी कोई प्लान नहीं है। मैं तो की बात कर रहा हूँ जिसमें BMS हमारा होगा एंड वी विल असेंबल दीज बैटरी। ओके। जो 99.9% फैक्ट्री जो इंडिया में चल रही है। ओके, अच्छा। एंड एक और था, आपने बोला कि 60-70% हमारा इसमें ईवी एंड सोलर में रहेगा एंड द रिमेनिंग जो हमारे सेगमेंट्स है, आई थिंक पावर बैकअप, LED, इन सब का, तो ये सब का वी विल ग्रेजुअली रिड्यूस देम और लाइक व्हाट आर। नहीं सर, ये सारा मिला के 30% है और 70% जो है वो ईवी है, 60-70%। बिकॉज जब हम पावर की बात करते हैं तो जो इन्वर्टर्स हैं, इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सोलर। ओके, ऑन दिस LEDs एंड मेडिकल ग्रेड डिवाइसेस। LEDs भी बहुत ज्यादा नहीं है। मेडिकल सर, जब मेडिकल की बात करते हैं तो वो रिपीट मेडिकल डिवाइसेस का प्रोडक्ट है, वो सर्वोटेक का नहीं है, तो वो एक अलग डोमेन है पूरा और वो सब्सिडरी अलग है। अच्छा, ऑलराइट, समझ गए सर। ओके, बस मेरी ये क्वेश्चन सर। थैंक यू। Thank you, sir. Dear participants, if you have any questions, please press star and 1 on your telephone keypad. So there is a follow-up question comes from Sahil Gupta, an individual investor. Please go ahead. हेलो सर, ये जो हमारी सर्वोटेक ईवी इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड है, इसमें हम चार्जिंग स्टेशन अपने सेटअप करके देन वी विल चार्ज ऑन द चार्जिंग बेसिस, राइट? कि सर इसमें यूनिट इकोनॉमिक्स आप बता सकते हैं कि मतलब कैसे चार्ज करते हैं हम कस्टमर को, कितना अमाउंट रहता है और प्रॉफिटेबिलिटी कैसे रहती है? मैं आपको सर यहाँ पर 2 चीजें बता देता हूँ। जो मुझे लगता था कि मैं पब्लिकली विल गो टू अनाउंस वेरी सून, बट ये सवाल दोबारा आ गया है तो मैं 2 चीजें आपको बता देता हूँ, राइट। तो मैं आपको पहले से बताता हूँ, जो हमने सर्वोटेक ईवी इंफ्रा बनाया है, राइट, तो इसका प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट हमने अभी किया है 200 करोड़ की वैल्यूएशन पे अप्रोक्सीमेटली। Okay. And we have sold out around 6% equity to the investors. That means कंपनी को 200 करोड़ की वैल्यूएशन मिल चुकी है। दैट इज नंबर 1। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से आपके इन्वेस्टर्स के लिए गुड न्यूज होनी चाहिए, बिकॉज 93-94% स्टिल रिमेन विद सर्वोटेक। तो अगर आप सर्वोटेक के इन्वेस्टर हैं तो वो बाय डिफॉल्ट आपकी भी इन्वेस्टमेंट उसमें होगी। दैट इज नंबर 1। नंबर 2, इसकी जो यूनिट इकोनॉमिक्स है उसके अंदर हम जितने भी काम कर रहे हैं, हम कोई भी काम ऐसा नहीं कर रहे हैं जिसके अंदर हम फिक्स कॉस्ट को एकोमोडेट कर रहे हैं। हम जितने भी चार्जिंग स्टेशन बनाएंगे वो सब कॉस्ट मतलब प्रॉफिट शेयरिंग बेसिस पे होंगे। दैट मीन्स चार्जेस हम लोग इंस्टॉल करेंगे और जो सिस्टम है या इंफ्रा है वो डेवलप किया जाएगा वहां का जिसकी वो जमीन होगी या जो भी हमारा सेकंड पार्टनर होगा, राइट। अब इसके अंदर जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो इस तरीके से है कि चार्जिंग स्टेशन की टोटल कॉस्ट 3 साल में रिटर्न आ जाती है। दैट मीन्स ये 3 साल के बाद प्रॉफिटेबल होना शुरू होंगे और तब तक ये अपनी कॉस्ट को रिकवर जो है वो रिकवर कर लेंगे। और अगर इसकी डिटेल्ड कुछ चाहिए आपको तो हम उस पर काम कर रहे हैं, बहुत जल्दी आप लोगों से शेयर करेंगे। तो ई चार्जिंग स्टेशन सेटअप करने में टोटल कॉस्ट मतलब लगभग 15 लाख से 20 लाख एक चार्जिंग स्टेशन में, 15 से 20 लाख रुपए एक चार्जिंग स्टेशन में। ओके, तो 15-20 लाख रिकवर करने में 3 साल लग जाते हैं। जी जी जी, अगर आपको जमीन और बाकी चीजें फ्री मिली हैं तो, वो अगर किसी और की हैं तो। ओके, सो ये 3 years मीन्स आवर कंट्रीब्यूशन विल रिटर्न बैक इन 3 years, 50-50 दोनों का हो गया ना? जी राइट, तो वो अपनी भी तो रिकवर करेगा ना, तो हम अपने पार्ट की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब टेक्निकली आप 30 से 40 लाख रुपए रिकवर कर रहे हैं। डेढ़ टोटल रिकवरी मतलब 1.5 साल में मान सकते हैं। विल बी अराउंड 40 to 45 लाख रुपए। ठीक है, समझ ओके, थैंक यू सर। इट मीन टेक्निकली 10 लाख रुपीज पर ईयर हो गया। ओके, अगर हम 4 साल कहते हैं तो, राइट। थैंक यू। Thank you, sir. The last question comes from Jitesh Parmar, an individual investor. Please go ahead. हेलो सर, मुझे बिजनेस से रिलेटेड कुछ पूछना था सर। जो ये हमें जो ये बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं
और हम जिसके लिए जा रहे हैं उसमें मेंटेनेंस कंपोनेंट कैसे होता है और वो कैसे मतलब आप देख रहे हो प्ले आउट करेगा जब हमारा वॉल्यूम बढ़ेगा? बहुत बढ़िया सवाल पूछा आपने और मुझे उम्मीद नहीं थी कि कोई ये सवाल ही मुझसे पूछेगा, बट आपने पूछा, बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पर मैं अपने शेयर होल्डर्स को एक बात और बता देना चाहता हूँ। मुझे एक गलतफहमी है, राइट। वो गलतफहमी ये है कि सर्वोटेक जहां तक पहुंची है उसके पीछे मेरी सोच का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि एक कंपनी को स्टार्ट मैंने किया था और मैंने ही सोचा था कि इसको कहां तक लेके जाना है, करेक्ट, और मैं इसको यहां तक ले आया। तो मुझे लगता है कि अगर कल को मैं ना रहा या कल को मैं इस कंपनी में नहीं रहता तो कंपनी आगे कैसे बढ़ेगी, इस बात को सोचते हुए हमने सर्वोटेक का बिजनेस कॉन्टिन्यूटी प्लान फॉर नेक्स्ट 50 ईयर्स लिखना शुरू कर दिया कि सर्वोटेक 50 साल के बाद कैसी होगी और 50 साल आगे भी कैसे चलती रहेगी। दैट इज नंबर 1। जब हम 50 साल सोच रहे हैं तो 3 साल बाद भी सोच रहे हैं। तो हमने क्या किया है कि हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारे प्रोडक्ट IoT बेस्ड हैं, जिसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है, राइट। हमारे सर्विसिंग डिपार्टमेंट में AR, VR, AI सबको इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है। हमारे जितने भी चार्जर्स हैं वो कहीं भी अगर लगे हुए हैं तो उसकी गूगल लोकेशन हमारे पास है, GPS लोकेशन। अगर चार्जर में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम उसकी डेटा लॉग रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं, रिमोटली हम उसको वैसे ही अपग्रेड और अपडेट कर सकते हैं जैसे आपके मोबाइल पे एंड्रॉयड या iOS अपडेट होता है। हम फॉल्ट फाइंडिंग रिमोटली कर सकते हैं जिससे हमारी सर्विसिंग की कॉस्ट नीचे आती है। और आपको बताने में मुझे बड़ी खुशी होगी कि आने वाले 3 साल के बाद सर्वोटेक को एवरेजली जितना आज उसका ब्रेक इवन कॉस्ट है उतना पैसा उसको AMC और सर्विसेज से आना शुरू हो जाएगा, जिससे कंपनी कैश रिच हो जाएगी। उसको पैसे की जरूरत नहीं होगी फॉर अ रेगुलर एक्सपेंसेस। इतना अमाउंट वी विल चार्ज एज अ AMC एंड सर्विसेज आफ्टर 3 years for next, because our every contract is a 7 years agreement, next 7 years agreement after the warranty, so that we are trying to strengthen our after sale service through AI and AR and VR. ओके सर। और सर हमारी प्रैक्टिस रही है कि जब हम एक बड़ा बिजनेस वर्टिकल पोटेंशियल देखते हैं तो हम एक सब्सिडरी जनरली जाते हैं, ओके, क्रिएट करते हैं उसे अच्छे से मैनेज करने के लिए। तो वी विल सी समथिंग सिमिलर इन नेक्स्ट 1 or 2 years। सब्सिडरी मीन्स मतलब फॉर AMC कॉन्ट्रैक्ट एंड AMC मैनेजमेंट, ओके, बिकॉज इसमें इतना सारा पोटेंशियल है। सर्वोटेक EV इंफ्रा इसी के लिए तो बनाई गई है कि वो इंफ्रा डेवलप करेगी, इंफ्रा जैसे बात में AMC और सर्विसेज देखेगी। ओके, तो वो इंफ्रा के अंडर आ जाएगी। ओके सर। Yes. और सर दूसरा क्वेश्चन ये था कि हमने डोमेस्टिक तो अपॉर्चुनिटी बहुत देखी है, आर वी प्लानिंग फॉर एनी एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी? वहां पे कुछ प्लान है या फिर वहां पे कोई ट्रैक्शन है या अभी हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम उसके लिए? खुशी हो रही है, आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि लास्ट जो Q3 है इसमें और एक्सपोर्ट कितना हुआ? लगभग 10 करोड़ गया है ना, 10 करोड़ 1 बिलियन गया, 1.2 बिलियन। लास्ट एक क्वार्टर का जो हमारा एक्सपोर्ट है 1.2 बिलियन है। अच्छा, 1.2 बिलियन। ओके, ऑल आर इन सैम्पलिंग बेसिस। So you can assume how much samples we have already distributed across the world. तो सर हम कौन सा रीजन मतलब टारगेट कर रहे हैं? मिडिल ईस्ट, यूरोप या US? आई मीन व्हाट रीजन? जहाँ पर भी हो जाएगा सब जगह करेंगे। तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, UAE, मिडिल ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप, UK, US, एवरीवेयर। तो सर ये रेशियो क्या आप देखते हैं अगले 1-2 सालों में? सर 145 से ज्यादा इंजीनियर्स हैं हमारे पास काम करने के लिए, जिनको अलग अलग वर्टिकल दिए जा रहे हैं और प्रोफेशनल्स की टीम डाली जा रही है जो इन सब चीजों को देखेंगे। ओके सर, ओके सर, दैट इज इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। Thank you, sir. There are no further questions. Now I hand over the floor to management for closing comments. Thank you, dear. I think my closing remarks I have already told everyone. We thank all the participants once again for attending this session. We believe that we have satisfactorily run you through our company and business model.
We continue to see growth in our broad product portfolio and witness a strong momentum across our business support by R&D and other strategic initiatives. We remain focused on bringing new products, exploring new markets, and creating value for all our stakeholders, and hope you have a great day ahead. Thank you once again. Thank you. Thank you, sir. Members of the management, ladies and gentlemen, on behalf of Ventura Securities, that concludes this conference. Thank you for joining us, and you may now disconnect your lines.